Assalamu alaikum. Our today's topic is dipole moment. In our last lecture, we have discussed the bond energy and the factors on which the bond energy depends. Now, today's our topic is dipole moment. So, first of all, we try to know what is dipole moment. For that, we have to consider a molecule, which is hydrogen molecule, and another molecule, which is known as hydrochloric acid. These both molecules are covalent molecules having covalent bond. These both molecules share the electrons. These both molecules having covalent bond. But there is a difference because the bonded atoms have different electronegativity. For example, for hydrogen, its electronegativity is 2.1, and for this hydrogen, electronegativity is 2.1. But for hydrochloric acid, the electronegativity of this hydrogen is 2.1, while for this 3.0. You know the difference of electronegativity makes difference. The electronegativity is the power of an atom to pull the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. Chlorine belongs to the group 7A and it is more electronegative than hydrogen. Therefore, it pulls the sharing pair of electrons towards itself. So, the direction of flow of electrons is from hydrogen to chlorine. This arrowhead is towards where electron goes. ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी फ्लो नहीं करता. ठीक है? This is the basic difference. और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई. ठीक है, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस मॉलिक्यूल को स्लाइटली पोलर बना देता है या हाईली पोलर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल पोलर हो सकता है और उतना ही वो नॉन पोलर भी हो सकता है, लेस पोलर भी हो सकता है. तो दिस डिग्री ऑफ पोलैरिटी इज नोन एज डाइपोल मोमेंट. कि कोई मॉलिक्यूल कितना परसेंट पोलर है. फॉर एग्जांपल, अ मॉलिक्यूल हैविंग 90% पोलैरिटी इज मोर पोलर. और अनदर मॉलिक्यूल हैविंग 60% पोलैरिटी इट हैज लेस पोलर. ठीक है, दैट पोलैरिटी, द डिग्री ऑफ polarity is known as dipole moment. ठीक है, तो here this we can say this molecule is polar while this is non-polar. Why it is so? Because it has some dipole moment. There is unequal sharing of electrons. The unequal sharing of electrons is due to the electronegativity difference of the bonded atoms. Now the dipole moment is denoted by this symbol and it is measured in dipole. Dipole is the unit of dipole moment and micro is equal to the distance r multiplied by the magnitude of charge. By this formula we can calculate the dipole moment of any molecule. Now we have discussed the dipole moment. Now we have to check some molecules whether it has dipole moment or not. Is it polar or not? For example, if I talk about this CH4 molecule. Now, is it polar or not? First of all, yes, it is not polar. Now we will discuss in terms of dipole moment. For that, consider the carbon. Carbon is the central atom. 4 hydrogens are attached with this
Here is one hydrogen, another hydrogen. Now we will discuss this methane molecule in terms of dipole moment. Is it polar or not? For that, I and you must know the electronegativity differences of this hydrogen and this carbon. And we all know the electronegativity of this hydrogen is 2.1 and this hydrogen 2.1, this hydrogen 2.1 and this hydrogen also 2.1. But the electronegativity of carbon is 2.5. 2.5. Now what do you think? Which atom has more electronegativity? Yes, of course, carbon. So the sharing pair of electron will be much closer towards carbon is compared to hydrogen. Due to electronegativity, it will pull the sharing pair of electron towards itself. It will pull the sharing pair of electron towards itself. It will pull the sharing pair of electron towards itself. ठीक है, तो अब हमने चेक ये करना है कि क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं. तो अब हमने डाइपोल मोमेंट के एरोस को हमने डायरेक्ट कर दिया है. रिमेंबर, डाइपोल मोमेंट is a vector quantity. Now we can add these vectors by head to tail rule and it will define us whether it is polar or not. चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जितने भी वेक्टर्स हैं इनको हम वेक्टर्स A, B, C and D नाम देते हैं. और अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये जो A, B, C, D है इनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करते हैं. और अगर चारों वेक्टर्स आपस में हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड हो जाएं और कोई रिजल्टेंट न हो, रिजल्टेंट ज़ीरो हो, तो इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल आपका ज़ीरो डाइपोल मोमेंट रखता है. और अगर उसका कोई रिजल्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ डाइपोल मोमेंट रखता है. दैट मीन्स कि दैट मॉलिक्यूल इज़ पोलर. ठीक है, तो चलें, अब जब हम इन वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि एंगल और डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना होता है. ठीक है, चले, मैं कंसीडर ये करते हुए कि मैं बिल्कुल एंगल और डायरेक्शन का ख्याल रख रहा हूँ. दिस इज वेक्टर ए. ठीक है, दिस इज वेक्टर ए. अब मैं इस पे वेक्टर बी ऐड कर रहा हूँ. दिस इज वेक्टर बी. अब इसमें मैं वेक्टर सी ऐड कर रहा हूँ. दिस इज वेक्टर सी. और अब वेक्टर डी ऐड कर रहा हूँ, डी. ठीक है, नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट? Yes, of course, zero. The resultant is zero. Therefore, we can say the dipole moment of this molecule is zero. And any molecule having zero dipole moment is known as a non-polar molecule. ठीक है, इसके बजाय एक और मॉलिक्यूल चेक करते हैं. Now, another example is BF3. ठीक है, तो आपको इसकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए. BF3, B, then 1F is here. ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है इसकी. 1F is here and another F is here. अब दोबारा से हमें पता है कि this fluorine is more electronegative than boron. Therefore, the sharing pair of electrons, these pairs of electrons are pulled by this halogen, this fluorine. Therefore, the direction of flow of electron is like this. Like this and like this. The arrow denotes the flow of electron. जैसे यहाँ पर हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कार्बन की तरफ था. यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फ्लोरीन की तरफ है. ठीक है, अब हमने देखना ये है कि देयर इज अ डाइपोल मोमेंट, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ये पोलर है या नहीं है. फॉर दैट वी हैव टू ऐड दीज vectors by head to tail rule, and this is A, this is A, this is B and this is C. First मैं A को सपोज करता हूँ कि this is A vector. Now B का डायरेक्शन क्या है? This is the direction of B and this is the direction of C. Now you can tell me, you can see the resultant of this addition. Again, the resultant of this addition is zero. Therefore, this molecule also have
zero dipole moment. Therefore, this is also a non-polar molecule. Let's consider the another one, water molecule. अब हमने ये चेक करना है कि क्या वाटर मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं. फॉर दैट अब हमें पता है कि दिस इज ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर, one here, another one here, and two hydrogens like this. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होगा. अच्छा, ये जो लॉन्ग पेयर्स होते हैं ना, दीज आर लाइक दिस. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अगर मैं यहाँ से उठा के इधर रख दूँ ताकि समझाने के लिए मुझे आसानी हो, तो हियर द डायरेक्शन इज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, अब हम इनका नाम रखते हैं. दिस इज साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ठीक है. वी आर गोइंग टू एड द वेक्टर ए इज दिस, द वेक्टर बी इज लाइक दिस, this is A, this is B, and the vector C is like this, and the vector D is like this. ठीक है. So the resultant should be, there is some resultant, this is our resultant. So it shows that the water molecule has a dipole moment not equal to 0, which shows that this water molecule is polar. अच्छा, एक और चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब मैं ये वेक्टर ऐड कर रहा था तो मैंने क्या किया, जब ये हाइड्रोजन वाला एटम ऐड कर रहा था तो इसका ये जो मैग्नीट्यूड था मैंने काफ़ी लंबा लिया, ऐसा कहते हैं बड़ा मैग्नीट्यूड. ठीक है. यहाँ पर जब मैंने मैग्नीट्यूड लिया है तो ये बहुत लंबा मैग्नीट्यूड लिया, लेकिन जैसे मैं लॉन्ग पेयर्स की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड को छोटा कर दिया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को छोटा कर दिया, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ जो लेंथ है ये दोनों एटम्स का एटॉमिक रेडियस आ रहा है, तो उसकी लेंथ वो ज़्यादा होनी चाहिए. लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का बैलेंस चले और सिर्फ ऑक्सीजन का रेडियस है, इसलिए उसकी लेंथ कम होगी. तो यहाँ पर जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो लोन पेयर वाला है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम है लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड डाइपोल का ज़्यादा है. ठीक है. तो इसका भी हमने ख्याल रखना होता है. ठीक है. तो हम इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट मालूम कर सकते हैं. हम ये पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज़ polar or not.